आउरी 3 जण बाकी रहिलेनी रेकॉर्डिंग स्टार्ट हलानी रजिस्ट्रेशन कर दियो जल्दी हेलो रजिस्ट्रेशन कर दियो आउ 3-4 जण रहिलेनी मझिरे मेसेज बॉक्स को जाइकरी क्लिक करिकरी रजिस्ट्रेशन कर दियो आउ 3 जण के रहिलो रजिस्ट्रेशन कर दियो टिके डेरी होची मझिरे जो मेसेज बॉक्स अछि ताको क्लिक करिकरी रजिस्ट्रेशन कर दियो देवाशीष रजिस्ट्रेशन कर दियो मझिरे मेसेज बॉक्स रे क्लिक करिकरी देवाशीष हेलो आगे सर कर दियो जल्दी कर दियो आज्ञा सर प्रणाम मु संग करूची रजिस्ट्रेशन गुड इवनिंग सर कर दियो स्टार्ट करियो कालांदी करण बोलते म्यूट करो सर करछु सर हां म्यूट कर दियो साउंड सुन ओके ऑलराइट आउ जी अच्छा मझिरे क्लिक करिकरी मेसेज बॉक्स रे रजिस्ट्रेशन कर दियो रेकॉर्ड रहउची रेकॉर्ड रहिबो को माने क्लास करछन को माने करू नाहंती so let us listen सुना मो वॉइस क्लियर होची तो हेलो हां सर ठीक है सर ओके सो सर क्लियर हो ओके ओके गुड इवनिंग टू ऑल लर्नर्स जे गत काली हमें जो क्लास करिथिले बा काउंसलिंग पार्ट जो MRD-E टा हमें करिथिले MRD-E से रॉन्गली जोटा कि प्रिंट करिकरी मेसेज छाड़ी देथिले सेंटर तरफ रु बुझ पेलो से जो पिलाटी सस्मिता कहउथला से त काई आज आसीनी बोधे हेलो काली जो से जे कहउथले जे सेटा MRD-E बोली काली किए थिलो हमर देवाशीष थिला बोधे मो दिले सर हां प्राय ऑलमोस्ट समस्त थिले ठीक है सर नहीं कि अच्छा सुनो सेटा रॉन्गली जे कि से प्रिंट करी छाड़ी देथिले बुझ पाइलो ना रॉन्गली प्रिंट करी मेसेज बॉक्स रे छाड़ी देथिले एक्चुअली हमें जोटा पढ़िबा MRD-101 तेणु मते डायरेक्शन थिला जे MRD-E तम गति जोटा जाइथिला मेसेज रे मो गति मध्ये सेटा आस्थला तेणु करी MRD-E टा होची सेकंड ईयर हमें पढ़िबा सेकंड ईयर रे तेणु से कहले जे फर्स्ट ईयर रे हमें MRD-101 प्रोसीड करिबा The learning process focuses on MRD-101 बुझी परला सुशांत सर काली टिके मिस्टेक हे गला फास्ट दिन रे से जे टाइप करिथिले रॉन्गली टाइप कर देले सेटा MRD-E तेणु मु प्रोसीड कली MRD-101 को ठीक अछि सेटा सेकंड ईयर दरकार पड़िबो एटा माने रिजल्ट किछि असुविधा नाही नेगेटिव हेबनी
जानी गले चैप्टर टा ऊपर so today we proceed MRD 101 the first year block hence so let us listen about block 1 rural society and economy. So this block contains that rural society and economy and unit 1 introduction to rural society will introduce you to basic features of rural society versus other kind of society such as tribal and urban society in our country. भारतर रूरल सोसाइटी ग्रामांचल सामाजिक अवस्था चित्रपट एवं अदर काइंड्स ऑफ ट्राइबल एंड अर्बन सोसाइटी विषय आम एथिरे किछि जानिबा एंड यूनिट 2 रे रूरल डेमोग्राफिक फीचर्स विल प्रोवाइड यू एन ओवरव्यू of rural population in our country, that about the rural population, because the subject content specifically focuses on the rural areas. So that is why rural demographic feature will provide you an overview of rural population in our country, like the size, composition, distribution, growth, and migration of the rural people. And unit 3 also will discuss and some important components of the rural social structure, like casteism in village and caste and class social mobility in Indian village. Apart from that, within families and the nature of distribution of power in rural India. गाँ गंडा अंचल थिबा गाँ गंडार कास्टिज्म एवं इंडियन विलेज एवं सोशल मोबिलिटी गाँ गंडा अंचल लोक माने किभली माइग्रेट होइथांती विभिन्न अंचल को विभिन्न प्रकार अपॉर्चुनिटी पाई ये मध्य आधार अछि. सो unit 4 that this unit will familiarize you with the structure of the rural economy and the main issues affecting it, with focus on agriculture and other related aspects of rural economic structure. Specifically, unit 4 contains the rural economic structure and the economic that disparities in rural areas, and 5 will elaborate on themes like poverty in the global context, concept measurement of poverty, etc. So unit 5 रे हमें पढ़िबा poverty concept etc. So introduction to rural society. आम भारतीय संस्कृति भारत होची एभली गोटे देश that focuses on the and links with the social custom and tradition best countries in the world. No other countries as like as India, and always India focuses on the tradition and custom, culture, संस्कृति, रीति, प्रथा ऊपर पर्यवेसित. You know that during 1901 census calculation, that 89% of Indian resided in village. 89% people resided in village area, and that it is reduced during 1961. 61 because that reduced marginally to 82%, the total population living in rural areas. So urban people and rural people that simultaneously careerly should be linked, coordinated, and by which economic growth and social development, political development, scientific development, educational development, and political development, everything will be held possible. And growth development is the main focus point of the Indian rural society. Hence, that a person, there is, however, no doubt that even today a significant portion of the Indian lives and derives livelihoods from village area. India is a country of villages. Mahatma Gandhi, our national figure, that once upon a time was titled that Bharata गाँ गंडार अवस्थित
India lives in villages. So Mahatma Gandhi entitled India is a country of villages. महात्मा गांधी दिने कही जे भारत संपूर्ण भाव में गाँ गंडार अवस्थित सो दैट इज व्हाई वी शुड डेवलप द रूरल विलेजेस दैट मैक्सिमम more than 80% people lives in rural areas and they follows the tradition customs and that life smoothly they continue their life smoothly and earns the livelihood from the agricultural sector specifically and also from allied sectors of agriculture. So if we will focus, the government will focus on the rural development so that the country will develop. If the per capita income of the village people will increase or hike, that will have a very good impact to hike the national income of the country. जदि गाँ गंडा अंचल 80% लोक बसवास करुछंती that about 70% people depends on the agriculture and allied activities so that if the per capita income of the village people will increase hike that will have a very good impact positive impact on the hike and the national income. गाँ गंडा अंचल जदि अधिक परिमाण लोक बसवास करुछंती तेणु गाँर विकास हेले समग्र देशर विकास हब दिने महात्मा गांधी से कथा कहते जे भारत आम देश गाँव रे अवस्थित कारण गाँ को नहीं भारत गठन से गाँर विकास हेले आम देशर विकास हम गाँर विकास किभली हम अर्थनैतिक दृष्टिकोण ना गाँ लोक मानकर मुंड पिछा आय वृद्धि हवा दरकार जदि गाँर 80% लोक मानकर मुंड पिछा आय वृद्धि हम that will have a very good impact. That will increase in national income. देशर जातीय आय वृद्धि पाइब. So that is why we should focus on our study towards the village area. 80% people lives in village area and where 70% people depends on the agricultural sector. The census that states a rural community on the basis of the size and the density of a population at a particular place in India has that the term rural is defined term as revenue. Rural माने गोटा निर्दिष्ट revenue अंचल को बुझाउछि. So the village means the revenue village. So rural means गोटा revenue अंचल को बुझाउछि ताको कहिबा rural अंचल बा rural area. And village क्या कुआ जीवो? The village means the revenue village where the government collects revenues from panchayat area, from village area. So it might be one large village or a cluster or small village. यह गोटे छोटिया गाँ अंचल हो पारे किंबा गोटा बड़ बड़ अंचल को नहीं गोटे गाँ गठन हो पारे. Hence we see that on the one extreme are the affluent village. अनेक गाँ गंडा अच्छी आम देश रे भारत रे स्टेट अनुसार आमे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू रु आमे देखिबा the some of the states are rich in our country like Punjab, Haryana, Maharashtra, Gujarat, Uttar Pradesh. The most of the western part of the states in our country are belongs to rich states and some of the states are poor eastern part of the country like Odisha, Bihar, Jharkhand, some part of the Madhya Pradesh are belongs to poorer states. As we know, Odisha is a rich state where poor people are living. Odisha, as similar with Jharkhand and Bihar also. झारखंड बिहार ओडिशा ये तीनटा स्टेट एका कैटेगरी रो प्राय फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू आम डिस्कशन करूचंती. सो मु गोटे स्टेट आम ओडिशा कथा आम कहिबा आलोचना करिबा. आज ओडिशा मु कहबी ओडिशा इज ए रिच स्टेट वेयर पुअर पीपल आर लिविंग. कैन वी जस्टिफाई इट? नित्यानंद, सुशांत, हेलो सुशांत, मिस्टर सुशांत, नित्यानंद. हाँ सर. कैन यू जस्टिफाई? ओडिशा होची गोटे धनी राज्य किंतु गरीब लोक माने बसवास करंती. सुशांत तम घर कुआडे?
भंजनगर सर। अच्छा, नित्यानंद? बौद्ध सर। अच्छा, कांदी? भद्रक सर। अच्छा, okay. So let us listen. Can we justify that Odisha is a rich state where poor people are living? सर बेसिकली ओडिशा रे ग्रामांचल सर देखा हाँ, जाए सर ओडिशा कौन रे देखा जाए कुह कुह। बेसिकली रूरल एरिया सर अछि सेतिबेई सर हम्म, एटा हमरो पोर पीपल माने बेसी बसवास करन जोदमी तांकर मेन लेवल इकोनॉमिकली से माने होगी डाउनवर्ड अछंती अलगा स्टेट तुलना रे। अच्छा, मु रैंडमली आउ टिके टेस्ट करे, आउ टिके पचारे। देवाशीष, देवाशीष, देवाशीष कहि परिबो? हेलो देवाशीष महांती। देवाशीष कोन मोबाइल ऑन कर देकी पळै जाईची कोन की? देवाशीष हेलो। अरे 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 टिके ठका ठकी करो नाही, निजे किछि ज्ञान आहरण करिवो। देवाशीष काहे ताको भॉइस म सुबुने? अच्छा, प्रियंका, प्रीति साहू कहि परिबो? Hello. प्रियंका, प्रियंका कहि परिबो? Sir, हेलो ଓଡ଼ିଶାରେ hello हाँ कुह। hello sir हाँ हेलो ଓଡ଼ିଶାରେ सुबुची। ହଁ yes sir sir ଓଡ଼ିଶାରେ basically economic sources ବହୁତ ଅଛି but ଲୋକ ସେତିକି aware ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ like system କୁ ସେମାନେ ସେମିତି balance କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ ଜାଣିବେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ utilize କରନ୍ତି but ଆମେ ଧନୀ Let ରାଜ୍ୟ us. ବୋଲି Okay, ଓଡ଼ିଶାକୁ okay, କହିବା okay. Thank you to all learners. yes sir Those answers, whether your answer is clear or clearly justified or may not be justified. So let us listen. I am going to clarify and justify about the question and sentence. That's I told to you that Odisha is a rich state where poor people are living. कारण कौन? ओडिशा होची गोटे धनी राज्य, गरीब लोक माने बसवास करती। झारखंड बिहार अल्सो धनी राज्य किंतु गरीब लोक माने बसवास करती। We have affluent deposit of natural resources. ओडिशा रे प्रचुर परिमाण रे प्राकृतिक संबल भरपूर होई रही। So natural resources like mineral resources first of all. Mineral resources like iron ore, bauxite, manganese and petroleum like coal, जोड़ा बड़बिल गलानी झारखंड अंचल मध्य एई प्याच रे प्रचुर परिमाण रे मिनरल रिसोर्सेस डिपोजिट हेकि रहिछि and simultaneously we have land resources, forest resources, water resources and human resources. प्रचुर परिमाण रे we have natural resources, God's gift natural resources, but due to lack of planning, political will, it is not properly utilized so far today since independence. स्वाधीनता हवा परब ठारू मध्य ए पर्यंत सुधा ए प्राकृतिक संबल को सुपरिचालना करा जाई पारु नाही. We are just that exporting the raw materials at a cheap rate to foreign countries, whereas we have no industrialization and modernization. There is unemployment, poverty situation prevails in our country. This is one of the hazardous conditions for the states. But ମୁଁ କହିବି justify करबी से दृष्टिରୁ पंजाब हरियाणा poor state but where rich people are living. पंजाब हरियाणा दुईटी आमे जानिचंती वास्तविक धनी राज्य किंतु ମୁଁ କହିବି that पंजाब हरियाणा is belongs to poor state where rich people are living. Am I correct? कारण पंजाब हरियाणा रे ओडिशा झारखंड बिहार भली प्रचुर क्वालिटेटिव रॉ मटेरियल मिनरल रिसोर्सेस नाही, खनिज संपद नाही, बुझी पारलो, किंतु हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड. जेते हमें मोटर पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स बा
मोटर व्हीकल पार्ट्स सब देखुचंती फरीदाबाद मेड एट फरीदाबाद फरीदाबाद रे मैन्युफैक्चरिंग करा जाउची जेते आमे देखुचंती मोटर व्हीकल पार्ट्स हां तेणु हाईली इंडस्ट्रियलाइज हाईली मॉडर्नाइज्ड स्टेट्स किंतु सेठी खनिज संबल नाही ओडिशा बिहार झारखंड भली सेति पे आमे कहउचंती जे जदी नेचुरल रिसोर्सेस नाही बट दे आर इंपोर्टिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स फ्रॉम ओडिशा बिहार झारखंड एंड they are highly industrialized modernized states in our country. Are you clear hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sei dusturu ame kahiba that how can we develop the rural village of India? So affluent villages are there जोठी की प्राचुर्यपूर्ण गाँ गंडा अवस्थित पंजाब हरियाणा गुजरात महाराष्ट्र रे प्राचुर्यपूर्ण गाँ गंडा अवस्थित because due to political will planning strategy and developmental program and there sufficient facility towards the education health propaganda. So that's why the village, we can say affluent village exists in Punjab, Haryana, Gujarat, Maharashtra, प्राचुर्यपूर्ण गाँ गंडा अवस्थित but in Odisha आउ मु ता विषय किछि विशेष व्याख्या करिबि नाही समस्त त माने सबु जानिछ ओडिसा रो गाँ गंडा स्वाधीनता हवा परठारु ए पर्यंत अनेक गाँ गंडा अछि कि रास्ता घाट मध्ये ए पर्यंत संयोगीकरण हेइ नै इलेक्ट्रिफिकेशन हेइ नै एवं भलो स्वास्थ्य उन्नत स्वास्थ्य व्यवस्था संप्रसारण करा जाय नै इत्यादि. While speaking about the Indian villages, one has mind several types of communities, some multi-caste and having the members of just one caste, विभिन्न caste, school, विभिन्न जाति वर्ण संप्रदाय रा गाँ गंडा अंचल रे एका ग्रुप होई करी एकाठी बसवास करथांती गोटे गाँ गंडा अंचल रे. So like your responsibility, facilities like electricity, school, dispensary, etc. is inevitable for the rural village. That depends on the political, as what we elect the political leaders, accordingly they provide the administration for the village people. आमे जो मानको इलेक्ट करछोते सिलेक्ट करछोंती देशर जे जनमंगल राष्ट्र परिणत करिवो अर्थनैतिक मानदंड उन्नत करिवो एवं समाज विकास हबो अग्रगति हबो ताहा जनसाधारण को ऊपर निर्भर करिथे आम मानक हाथ रे निर्भर करिथे. आमे जो बळी लीडर को आम देश पई इलेक्ट सिलेक्ट करिवा सेही अनुसार से माने योजना प्रणयन करिवे देश पई देश को वेलफेयर कंट्री रे कन्वर्ट करिवे परिणत करिवे एंड डेवलपिंग रु डेवलप्ड कंट्री रे परिणत करि पारिबे. जदि आमे रंग सिलेक्शन कले ताले आमे से बेला रंग प्रशासन पाइबा सुफल प्लानिंग आमे पाई परिबा नै स्ट्रेटजी पाई परिबा नै देश सेही अंडर डेवलप हेई चली थिबो. So that tribes and peasants in rural areas, tribes and peasants, how can we clarify? Peasants होचंती गोटिए गोष्ठी जो माने कृषि सामग्री कृषि इत्यादि ऊपर जीविका निर्भर करथांती. ट्राइब्स होचंती गोटिए जाति जनजाति that belongs to backward areas. So generally a rural society is an agrarian society. So what is agrarian society? The people specifically depends on the agricultural sector. We can say it is agrarian society, which includes agriculturists, artisans, craftsmen, and other occupational groups, and they all are depend in one way or other upon the agriculture. But these are not only the people who lives in village communities and people who are called tribals also lives in village, and some of them have been having long standing relations with other non-tribal communities. केते गुडिए ट्राइबल कम्युनिटी आम देश रे अछि आम ओडिसा रे मध्ये अछंती. They are isolated groups from the society. से माने एकटिया निसंग निरोला जीवन यापन करिबा पय से माने भलो पाथांती. विशेष करी हिल ट्राइबल अंचल रे मान सब बसवास करिथांती.
The President of India once upon a time has titled थरे भारतर राष्ट्रपति आमर एमानकु ट्राइबल पीपुल ग्रुप रे अंतर्भुक्त करिथिले प्रिमिटिव ट्रेड्स ऑफ द ट्राइब its distinctive culture, its geographical isolation and social and economic backwardness is considered as the tribal people. जो माने कि अर्थनैतिक सामाजिक दृष्टि से माने पछुआ अटंती से माने गोटा निर्दिष्ट आइसोलेशन होइकरी समाज अवस्थारू से माने निजर समाज गठन करिथांती एवं बण पहाड़ घेरा अंचल रे मध्य बसवास करिथांती. So it is clear from the above points that in defining a tribe, emphasis is laid on the isolation of its members from the wider world. Because a tribe has a almost negligible relations with the other communities. A tribal people माने अन्यान्य community, अन्यान्य समाज सहित सेमानंकर विशेष संपर्क न थाए. It tends to develop its own culture. एमानकर निजर संस्कृति को विकास करबा पई से माने लागि थांती which are the little resemblance with the culture of the those community that have enjoyed long term interaction among themselves. That is a reason why tribal communities in anthropological literature are known as cultural isolates. The implication of this metaphor is that one can understand a tribal society without bothering to study the external world of which tribe may be an island. गोटे द्वीपपुंज रे बसवास करि पारि थांती नचेत बण पहाड़ घेरा अंचल रे बसवास करती but they are isolated people from the general community. If tribes are isolated, peasants are not. Tribes माने सब बेले isolated हे रहि थांती तांकर निजर कल्चर वन ट्रेडिशन को मेंटेन करि चलतांते निजर संस्कृति निजर वासगृह निजर रीति प्रथा को मेंटेन करि चलतांते. But peasants are not isolated. They are agriculturalists. सेमाने कृषिजीवी attached to soil and who intend to produce primarily for their subsistence, but they have to produce a little more because they do not manufacture and produce everything they need for their survival. They have to transfer and sell whatever little surplus up to markets located. That the peasants specifically focuses how to grow the agriculture and allied activities by which they maintain their family and the surplus food grains supply to the nearby the town areas where the surplus food grains and other items they supply to the nearby town areas, urban peoples, and where there is a deficit of these food grains. So village ame kaha kaiba characteristics, what are the features of the village? Village are principally food producing units. They are agricultural based. गाँ गंडा होची प्रकृत रे फूड प्रोड्यूसिंग यूनिट बोली आमे ताको कहबा एवं कृषि जीवी माने सेठी बसवास करि थांती. They produce not only for their own subsistence but also for the urban society. सेमाने निजे बंचिबा पई केवल उत्पादन करि न थांती सहरांचल को मध्य अर्बन एरिया को मध्य सेमाने सप्लाई करि थांती. Which are non food producing units. An urban society is not an agrarian society. कृषि भित्तिक उपरे सहरांचल नुहे. Agrarian society specifically depends and lives in village areas. So a peasant society in contrast has to that to generate surplus not only for the acquiring things that it does not produce but also for the city. Nagari sahar manang pai for urban people, for tribal people, for city people manang pai madhya semane production karitanti. Economic interaction is closely linked with political in village areas. Economic अर्थनैतिक लिंक political link सहित गाँ गंडा अंचल रे सबले लिंक थाए. So city कोगुडिका में city बोली कहिबा. Urban societies are characterized by large size, high density of population and heterogeneity. Specifically in urban area, people who are migrated from village area from different parts and different categories of people. विभिन्न अंचल विभिन्न संप्रदायर लोक विभिन्न दक्षता कुशल स्किल्ड पर्सन
ସେମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ लिटरेट पर्सन्स इलिटरेट पर्सन जो माने कि विभिन्न अंचल माइग्रेट होकर अर्बान एरिया रे बसबास करि थांती तो से गुडी को कहबा हमें सिटी एरिया सिटी अर्बान एरिया रे गोटे निर्दिष्ट स्पेसिफिक क्लस्टर बा ग्रुप रो पीपल माने न थांती विभिन्न कैटेगरी रो लोक माने थांती विभिन्न कार्य दक्षता स्किल एवं एफिशिएंसी थिबा व्यक्ति माने जो माने नागरिक माने से माइग्रेटेड होकर सहरांचल को धावमान होती विभिन्न प्रकार अपॉर्चुनिटी हासिल करबा पई तेणु सहरांचल रे विशेष करी द फैसिलिटीज आर अवेलेबल रोड ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिफिकेशन वाटर सैनिटेशन एजुकेशन हेल्थ प्रोपागेंडा एटसेट्रा आर cordially available in urban area. So urban life is different from the rural life. That urban society takes place a fast pace. Urbanities have a large area of interactions. They interact with people who live in different territories and work in different organizations. विभिन्न प्रकार संगठन अंचल रे अर्बान पीपल माने काम धंदा करि थांती विभिन्न अंचल को सेमानकर लिंक थाए सेमाने विभिन्न अंचल को मध्य गमनागमन करि थांती विभिन्न प्रकार कर्म संस्थान पाई सो रूरल डेमोग्राफी हमर अछि रूरल डेमोग्राफी इन द सिलेबस दैट इज डेमोग्राफी द साइंस ऑफ अ पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी. So who are the demographers? Those who studies on the science of a population are known as demographers. The science of a population, जनसंख्या उपरे जे जो शास्त्र अध्ययन करि थाए ताहाकू कहा जाए डेमोग्राफी. So demographer those who studies on science of a population जो माने जनसंख्या उपरे गवेषणा करि थांती तांको कहा जाए डेमोग्राफर बोली कहा जाए हैला. शिक्षा उपरे जे गवेषणा करि थांती तांको शिक्षाविद कहा जाए. विज्ञान उपरे जे गवेषणा करथि तांको कहा जाए वैज्ञानिक. ठीक से भलिया those who studies on the science of population are known as the demographer. The basic objective development is to improve the quality of life. हमरो साइंस ऑफ पॉपुलेशन कौन कहूची दे वी शुड नॉट ग्रो द क्वांटिटेटिव पॉपुलेशन बट वी शुड ग्रो द क्वालिटेटिव पॉपुलेशन दैट इज नोन एज द ह्यूमन रिसोर्सेस. भारत रे जो भली जनसंख्या एक्सप्लोशन घटुची जन विस्फोरण घटुची ता पृथ्वी रे कोनोसी देश रे एभली घटु नाही कारण डेंस पॉपुलेशन हियर जनसंख्या घनतापूर्ण देश. So density population per square kilometer is high. So what is the density of population? The total population living in a square kilometer, we can say it is density of population. गोटे वर्ग किलोमीटर रे बसबास करुथिबा मोट जनसंख्या को कहा जाए जनसंख्यार घनता इंग्रजी रे कहा जाए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. सो पृथ्वी रे भारतर जो छोटिया मानचित्रटी रे देखुथिबो जे 130 कोटी ऊर्ध्व लोक बसबास करुछंती जहा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया 5टी देश को मिसई देले जेतिकी जनसंख्या भारत रे प्रति वर्ष सेतिकी जनसंख्या सृष्टि. व्हाट द सीरियस पिक्चर. सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भारत रो जनसंख्या जो वृद्धि घटुची ताकू कहबा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जनसंख्या एक्सप्लोजन बोली कहबा. आटम बम को कहबा एक्सप्लोजन किंतु आमे कहबा जनसंख्या एक्सप्लोजन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. आटम बम ता एक्सप्लोजन ही थाए विस्फोरण ही थाए एक्सप्लोजन माने विस्फोरण. सो भारत रे जनसंख्या विस्फोरण घटु. सो आटम बम विस्फोरण ठारू जनसंख्या विस्फोरण अति मारात्मक अटे. ये क्लारिफाई करि परिबो जस्टिफाई करि परिबो किशोर करि परिबो कि जहाँ जानिଛ कहूना जहाँ जानिଛ को भूल कौन हैगला कहते माने हमरो नहीं सर माने हमरो भारत रे जति हमरो माने ये अछि प्लेस अछि से अनुसार ता अनुसार जदि जनसंख्या वृद्धि पाइबो
ତାହେଲେ ଆମକୁ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ବି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ତାପରେ ମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ସୁଶାନ୍ତ କହିପାରିବ କି? ସୁଶାନ୍ତ ଅଛ ନା ନାଇଁ ରେ? ପ୍ରିୟଙ୍କା, ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିପାରିବ? सर यस सर सर କୁହ रिसोर्स ର ଯାହା ଜାଣିଛ କୁହ। ସ୍କାର୍ସିଟି ହବ सर रिसोर्स ର ସ୍କାର୍ସିଟି ହବ ହୁଁ, ତ ଆସନ୍ତା ପିଢି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସଷ୍ଟେନେବଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଲୋପ ପାଇ ଆସିବ। ଆଉ ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ହେଭି ପପୁଲେସନକୁ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ମୁଁ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିଦଉଛି। ଓକେ, ସୋ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା जनसंख्या पॉपुलेशन एक्सप्लोशन इज मोर डेंजरियस देन दी एटम बम एक्सप्लोशन। बुझिपारल मोर क्वेश्चन टा जस्टिफाइड। सो आमे जानिचंती दिन थिला हिरोशिमा नागा जापान नो हिरोशिमा नागासाकी उपरे एटम बम पड़ीथिला एवं पर्टिकुलर सेही निर्दिष्ट अंचल को ध्वस्त विध्वस्त कर देथिला। ना पृथ्वीर अन्य अंचल कौन ध्वस्त होइथिला कि? अमेरिका होइथिला ना भारत होइथिला ना पाकिस्तान होइथिला? पर्टिकुलर अंचल को जोग्राफिकल एरिया को ध्वस्त विध्वस्त कर दबो। किंतु जान if there will be population explosion it is most powerful than the atom bomb explosion, as I am citing the examples. Due to explosion of population जनसंख्या यदि विस्फोरण हला गोटी अंचल रे सारा विश्व को व्यापी जीव। लाइक टेररिज्म, आतंकवाद भीतरे पृथ्वी सारा व्यापी चली। आतंकवाद, माओइस्ट, टेररिस्ट एवं वार अमंग द कंट्रीज जो वर्तमान कोरोना भाइरस कोविड-19 स्प्रेड है सारा पृथ्वी रे कौन? दिस इज वन टाइप ऑफ अटैक। सो आकु किए करुछि? जनसंख्या विस्फोरण हेले महामारी व्यापीब। महामारी व्यापीबा आमर आटम बम विस्फोरण ठारू अति मारात्मक अटे। प्रियंका मुझा कहली ठीक ना भूल? आज्ञा आज्ञा सर सर ठीक। जनसंख्या विस्फोरण हेले महामारी विभिन्न रोग व्यापीब। जदि गोटी अंचल व्यापिला सारा पृथ्वी की व्यापी जीव। आटम बम भली व्यापीब नाही, विस्फोरण हब नाही। आतंकवाद देख सारा पृथ्वी रे गोटिए देशरु व्यापुची सारा पृथ्वी को। जनसंख्या विस्फोरण रे होची कराಳ चित्र। तेणु जनसंख्या विस्फोरण हेले एही भली विपद आसी सारा पृथ्वी रे देखा जाई थाए। ताको नियंत्रण करिबा पई कौनसी विज्ञान बा राजनीति बा अर्थनीति केही नियंत्रण करि परिबे नाही। जनसंख्या विस्फोरण यह होची महापरिणाम। So that's why there are various branches of demography like historical demography, social demography, economic demography and mathematical demography, medical demography, एही भली विभिन्न प्रकार डेमोग्राफी अछि। So demography data like census, sample registration system, civil registration system, etc. So these are the items are included in this unit. And distribution of a density of population in rural areas. Distribution and density of a population in rural areas. As the factors that have guided the distribution pattern of population are the availability of a cultivable land, depth and fertility of soil, depth and of the underground water table, availability of water for irrigation, etc. So कौ अंचल रे विशेष करी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अधिका देखा जिवो। सो आम इंडिया रे हम जानिचंती केरल रे हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अछि। सो 2001 बेलकू प्रति वर्ग किलोमीटर रे 664 लोक बसवास करथिले केरल रे। सो हाईएस्ट होछि हमर वेस्ट बेंगल ले 674 पर स्क्वायर किलोमीटर वेस्ट बेंगल ले। केरल रे होछि सेकंड रे 664। So third रे
that is Uttar Pradesh about 455. So dense population are there. As density of population depends on the केते गुडे फैक्टर उपरे अधिक जनसंख्या को अंचल रे बेसी बसवास करନ୍ତି आम भारत रे विशेष करी उर्वर थिबा लैंड कल्टिवेबल फर्टाइल लैंड डेप्थ and soil fertility, depth of the underground water and availability of water for irrigation, जलसेचन सुविधा थिबो, चाषबास उर्वरिया जमीन इत्यादि थिबो, प्राकृतिक संबल भरपूर होई थिबो, सेही मान अंचल रे जनसंख्यार घनताटा अधिका देखा जाए। सेक्स कंपोजिशन सेही भलिया महिला पुरुष अनुपात सेही भली एक चित्र हमर डेमोग्राफिक रे। सो हमर 972 थिला लास्ट सेंसस कैलकुलेशन अनुसार जे प्रति हजार रे 972 हमर टोटल फीमेल थिले। तेणु केरल रे हमर गोटिए राज्य केरल रे जोठी की फीमेल का संख्या परसेंटेज हायर देन दी मेल। सो केरल सेति पई यदि महिला पुरुषंकर समानता गोटा ऑप्टिमम लेवल बैलेंस पोजीशन न रहइबो ताले से राज्य इकोनॉमिकली पॉलिटिकली एडवांस होई परिबो नाही। तेणु सेति पई सबुबले प्रत्येक क्षेत्र गोटा भारसाम्य दरकार। गतकाली हम जेमती आलोचना करूथले जे प्रकृतिर यदि भारसाम्य न रहइबो ताहले प्रकृति रोगाक्रांत होई परिबो। सेही भली सोसाइटी समाज रे उभय महिला पुरुष कर गोटे समानता बैलेंस व्यवधान रहिबा उचित रहिले हमर सोशली इकोनॉमिकली पॉलिटिकली वी कैन डेवलप। सो प्रत्येक रे गोटा ऑप्टिमम पोजीशन बैलेंस पोजीशन रहिबा दरकार। रूरल सोशल स्ट्रक्चर, the items included here the concept of caste in village area, caste and class, jajamani system, social mobility of the villages, families in rural India, nature of distribution of power in rural India. These are the items included in rural social structure. So village community, family and caste are the basic components of the rural social structure. रूरल सोशल स्ट्रक्चर हमर कोन अछि, विलेज कम्युनिटी अछि, फैमिली अछि, विभिन्न प्रकार कास्ट अछंती, विभिन्न प्रकार धर्म संप्रदाय रो लोक माने अछंती। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस सोशल स्ट्रक्चर इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ अ सोसाइटी। सोशल स्ट्रक्चर को बुझिबा पे हेले सोसाइटी रो नेचर को हमें जानिबा पड़िबो। ईच सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स सच एज इंडिविजुअल, ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन एंड एवं कम्युनिटीज एई भली सबु लोक माने सोसाइटी रे थांती। जने व्यक्ति थिबो, ग्रुप थिबे, अनुष्ठान थिबो, संगठन थिबो एवं विभिन्न प्रकार कम्युनिटी थिबे। द सिंपलेस्ट एनालॉजी one can think of that this point is that of one organism that has different components of working together as a whole। विभिन्न कैटेगरी रो लोक माने हमर सोसाइटी रे थांती जो माने समूहित भाव रे विभिन्न प्रकार काम धंदा करि थांती। सो व्हाट इज सोशल स्ट्रक्चर? Sociologists use the word social structure refer to the interrelationship, interconnectedness and interdependence of the different parts of the society. That is we can say social structure। समाज रे हमर अछंती, बारबर अछंती, मासुन अछंती एवं जो माने कुंभार, बढ़ई एवं ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं कृषक विभिन्न गोष्ठीर लोक माने परस्पर को कोऑपरेशन रे इंटरकनेक्टेडनेस रे इंटरडिपेंडेंस भाव रे से माने जीवन जीविका निर्वाह करथांती एवं परस्पर सहयोग कोऑपरेशन रे से मानक जीवन बितेई थांती। Thus there are group of communities in all society, but the nature and substance of these groups and communities different from one society to another। For instance, what example they period, an Indian village is unthinkable without the caste system। भारतीय सोसाइटी आमे भारतीय समाज को आमे कहि परिबानी सोसाइटी बोली, कारण जेते बेले आमे कहिबा भारतर विभिन्न धर्म, वर्ण, संप्रदाय, जाति र गोष्ठी एखादी गोटे गाँ रे बसवास करि थांती, सेते बेले भारतीय सोसाइटी बोली आमे कहिबा। किंतु चाइना रे फॉर एग्जांपल Chinese village does not have caste, all are Chinese people।
चाइना रे से भली कास्टेजिज्म विभिन्न धर्म गोष्ठी लोक नथांती इट्स यूनिट आर द पीपल ऑफ डिफरेंट फैमिलीज and occupational groups. The sense of identity that the people of different groups have is also seen at the level of the people of different families and occupational groups in Chinese village. The interrelationship of the different units constitute the structure of the Chinese society. କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟି କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇପାରିବା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ। କିନ୍ତୁ ଚାଇନାରେ ସେଇଟା ନାହିଁ। ଚାଇନିଜ ଅଲ୍ ଆର୍ ଚାଇନିଜ ପିପୁଲ। So there is no casteism or other groups. So caste system, caste is the main social institution of Indian villages referred as jati. ଆମେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଜାତି ବୋଲି। So various other local terms ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ local term ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ। It is collectively of people related to also by the ties of kinship and marriage which has monopoly over an occupation. It provides its specialized services and the products of its occupation to other caste groups. जणे जदि गोटे उत्पादन कला से एक्सचेंज करिवो बा अन्य गोटे उत्पादन करूथिबा सोसाइटी को बा कम्युनिटी को परस्पर मध्य रे से माने तांकर समस्या को वांट्स को दूरीभूत करिथांती। सो कास्ट आर आल्सो नेम्ड आफ्टर द करस्पोंडिंग ऑक्युपेशंस। ऑक्युपेशन अनुसार आमर जीविका अनुसार आमे कास्ट सृष्टि करिथाउ। फॉर एग्जांपल लाइक दोज सप्लाई ऑयल वर्तमान अवश्य देखिबा पई से भलिया पाइबा नाही किंतु हमर सब एगुडी को कास्टिज्म थिला एबे मध्य अछि हम भारत रे जो माने तेल जोगाण करंती वी कैन से दे आर ऑयल मैन बा तेली बोली हमें कहबा हम ओडिया भाषा रे जन बा ऑयल मैन। सो दोज बीट ड्रम्स ढोल जो माने पिटी थांती से मान को ढोलीज बोली कहबा। हां जो माने दोज डाय जो माने हमर डाय करंती से मान को कहा जाए रंगना विभिन्न अंचल रे। सो एई भली सब विभिन्न प्रकार कास्ट लोक माने सब वाशरमैन आम ओडिसा रे ताको कहबा वाशरमैन बोली से मध्य गोटे कास्ट अछि। कास्ट इन विलेजेस द मेंबर्स ऑफ ए कास्ट आर स्प्रेड ओवर ए रीजन इन मोर देन वन विलेजेस। द मेंबर्स ऑफ ए कास्ट लिविंग इन नियर बाय विलेजेस हैव मैट्रिमोनियल रिलेशंस अमंग देम। ईच कास्ट हैज इट्स ओन काउंसिल बा पंचायत। प्रत्येक जाति भित्तिक गोटा लेखा पंचायत थाए। जे कौन सी कास्ट लोक माने से माने जो कर्म करी थांती तांका भितरे गोटे गाँर मुखिया थाए बा से कम्युनिटी रो गोटे जने मुखिया थांती सेठी हमें कहबा पंचायत कहि परिबा व्हिच इज ए कलेक्टिव बॉडी ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट कास्ट लिविंग इन डिफरेंट विलेजेस बट सिचुएटेड क्लोज टू ईच अदर। जेमिति आमे सब वर्तमान क्षेत्रीय संसद ब्राह्मण समाज क्षेत्रीय समाज तेली समाज एवं एई भली सब विभिन्न समाज सब आमे देखिबा पई पाउचंती वर्तमान हम गाँ गंडा अंचल रे सहरांचल रे मध्य। तो ये सब विभिन्न कास्ट को लेकर विभिन्न प्रकार हमर सब कम्युनिटी सब गठन करा जायछि। जजमानी जानिथिबो जजमानी होछि गोटे सिस्टम आर द सेंटर इन द फैमिली आइदर सपोज एग्रीकल्चरलिस्ट जमींदारी जो माने सब होचन से माने ले जजमानी। इट रिसीव सर्विसेज फ्रॉम द फैमिलीज ऑफ ऑक्युपेशनल कास्ट फ्रॉम फार्मर्स एंड अदर कास्ट। ये माने ले अपर क्लास पीपल जमींदार महलवार ब्रिटिश अमल जोगुड़ा सब थिला। वन हु रिसीव सर्विसेज इज नोन एज जजमान जे की सेवा पाई थाए अन्य कास्ट रु ताकू कहा जाए जजमान बोली। सो जमींदार एठेला जजमान। द फैमिली दैट प्रोवाइड सर्विसेज नोन एज कामिनी काम करने वाले वर्कर्स एमान सब होचंती अन्य को जमींदार मान को सहाय्य करथांती। इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया टर्म सच एज परजना प्रधान बाल्टदार एगरा सब भारतर अन्य पार्ट सब अछि। So here
those who work for others, and one may call them clients. The implication is that those who do not work like जमींदार जो माने किसी काम करि न थांती गोड़ उपरे गोड़ थोइकरी काम आदाय करि थांती the big landowners सेमानकु जमींदार बा big landowners कहा जाए occupy the highest position in the secular ranking. Those who work for themselves, self-employed workers, and families work for others, carrying out various menial jobs. So zamindar hele the highest category of the people in the society. So semane तांकु सर्विस अन्य माने सब जोगै थांती ये गुडी सब होची जजमानी सिस्टम. सो एगुडा सब भारत आम राज्य ओडिसा रे मध्य ए पर्यंत सुधा अच्छी. सो नेक्स्ट आमे जिबा the item rural economic structure in rural areas. As another overall view of the trends growth of rural economic and the structure of production relation in rural India. In the process production rural workers enter into various kinds of economic relationship with each other. It is through these relationships that cultivator get access to land and credit, labor and other resources, and landless workers get access to employment. A study of rural economic structure is essentially a study of economic relations. Rural economic structure to if we will focus that can clarify the economic relationship among the village people. So agriculture. Discussing the importance of agriculture in Indian economy, that the primary sectors contributed nearly 60% of all goods and services. So basic characteristics of agriculture, like agriculture is the primary occupations of our rural people, and apart from this primary, like rice, wheat, pulses and other items, food grain items produced by the agricultural farmers. Simultaneously, there are allied activities also. कृषिजीवी माने सेमाने मुख्य कृषि काम करिबा सहित विभिन्न प्रकार खाद्य शस्य उत्पादन करि थांती. राइस, व्हीट, पल्सेस, डाली जातीय शस्य, ऑयल सीड्स बा तैल जातीय शस्य इत्यादि उत्पादन करि थांती एवं पनीपरिबा फल इत्यादि उत्पादन करि थांती. Simultaneously, the farmers, the house women and children also involved in allied activities of agriculture. सहायक कृषि, मुख्य कृषि एवं गौणीय कृषि दि प्रकार कृषि अछि. मेन agricultural activities and allied agricultural activities. So मुख्य चाषबास हला हमर धान, बिरी, मुग एवं तैल बीज चाष करिबा, पनीपरिबा, फलमूल चाष करिबा यहला मुख्य चाष. सो द्वितीय रे allied सहायक कृषि कोन ताहले ना कृषि को जे सहायता करे बा सहायता कृषि माध्यम रे आमे जीविका निर्वाह करिथाउ. सो आई एम साइटिंग द एग्जांपल लाइक गो पालन करिबा, मेष पालन करिबा, छेली पालन करिबा, गोटेरी, पिगेरी, फिशरी मत्स्य चाष करिबा, एनिमल हजबेंड्री एवं पोल्ट्री कुकुड़ा चाष करिबा ये गुडिक सब होउची हमर allied activities सहायक कृषि. जदि आमे जानि चंती जे भारतीय कृषि होउची इंडियन एग्रीकल्चर इज द गैम्बल ऑफ मॉनसून. भारतीय कृषि होउची मौसम वायुर जुआ खेल बा क्रीडनक. जदि भल मौसुमी वायु प्रवाहित हला, मौसुमी वर्षा हला, चाषी माने बेनिफिटेड हेबे. जदि भल मौसुमी न हला, चाषी माने खेत बाड़ी रे सब सारा विष विहन कीटनाशक प्रयोग कर दी आस्थिबे, किंतु भल वर्षा नाही बा मौसुमी भल हला नाही, मरुड़ी हे गला. चाषी माने कोन हेले विराट लूजर हेले. सेति पई कुआ जाईची ये गोटा क्रीडनक. इंडियन एग्रीकल्चर इज द गैम्बल ऑफ मॉनसून.
मौसुमी बायुर गोटे जुआ खेल जदि भल मौसुमी है तो चाषी मैंने उपकृत हेले जदि मौसुमी बायु ठीक नहला चाषी मैंने कौन है आत्महत्या कले विभिन्न मीडिया चाषी आत्महत्या वृद्धि पाँच कारण चाषी मैंने लॉस सो अगेन दैट ये जो आलाइड एक्टिविटी जदि सरकार प्रोत्साहन देवे विभिन्न प्रकार आलाइड एक्टिविटी पाए आलाइड एक्टिविटी कहले गो पालन करवा मत्स्य चाष करवा कुकुड़ा कुकुड़ा चाष करवा छेली मेष पालन करवा बतक पालन करवा कारण आधे कौन हो ना आम थ्रू आउट इयर वर्ष तमाम आय पाई चाषी माने घर महिला एवं पिला माने आधे कर्म निजुक्ति होता गाई पालन करवा दुग्ध प्रोडक्शन करवा दुग्धजात विभिन्न प्रकार हाँ ता सहित आम मांस मेष पालन गो पालन जो आम कौन कुकुड़ा पालन करवा छेली पालन करवा बतक चाष करवा आदि आम अंडा पाई मांस पाई थ्रू आउट इयर जदि मौसुमी बायु भल नहला चाष भल है ना जदि गोटे घरे गो पालन करिथिबो बा कुकुड़ा किछि रखिथिबो बा छेली किछि रखिथिबो से वर्ष तमाम आय करि परिबो वर्ष तमाम आय करि परिबो ना कोन किशोर ठीक ना नहीं हेलो सर तेणु करी ठीक हमको कृषि एनिमल हजबेंड्री उपरे मध्य गुरुत्व देबा पई पड़िबो एगुड़ी कह जाए हमर अलाइड एक्टिविटीज बा सहायक कृषि या माध्यम रे हमें विभिन्न प्रकार आय करि परिबा तो तापरे so this item includes these units also include that unemployment situation poverty situation in our country unemployment situation poverty जोटा कि कराल चित्र आम देश पाई गोटे कराल चित्र बा पॉवर्टी होती गोटे विशियस सर्कल रूरल पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन सो when people are titled unemployed at the prevailing wage if having proper education and efficiency if a person unable to get job opportunity we can say it is a unemployment situation बेकारी समस्या क्या कहबा जदि जने व्यक्तिर उपयुक्त शिक्षा दक्षता गुण थाइकरी प्रचलित मजूरी हार रे जदि नियुक्ति बा रोजगार न करि परला ताको हमें बेकारी बोली कहबा at the prevailing wage one individual having proper qualification efficiency knowledge if unable to get employment or job at anywhere we can say it is unemployed he is unemployed ताको कहबा तनु गाँ गंडा अंचल रे ए अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन बहुल परिमाण रे देखा दै था सेति पई सरकार कोन करूछन विभिन्न प्रकार माने कर्म संस्थान जोगै दउचंती एनआरजीएस माध्यम रे एवं अन्य कर्म संस्थान माध्यम रे ना गाँ गंडा अंचल रो लोक मानकु वर्षक रे एतिक दिन काम जोगै दिया जिवो तार मजूरी हार एया इत्यादि तो आउ देखिबा रूरल पॉवर्टी so poverty how can we define poverty दारिद्र्य आमे किभली दारिद्र्य को बुझिबा दारिद्र्य so poverty is a situation of grief despair and pain दारिद्र्य होची गोटे नैराश्य हताश जंत्रणादायक अवस्था hence in english we can define poverty is a situation of grief despair and pain दारिद्र्यर गोटे कराल चित्र अछि लोकटी दारिद्र्य होची केतेबेले जेतेबेले लोकटी बेकारी हैला रोजगार पंथा पाइला नाही that will affect to his health तार स्वास्थ्य को आघात करि थाए रुग्ण स्वास्थ्य बेकारी हेले रुग्ण स्वास्थ्य हो कारण अर्थ नाही सुषम खाद्य खाइबा पाई रुग्ण स्वास्थ्य हेले कोन हबो ना अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन देखा पॉवर्टी देखा जिवो दारिद्र्य देखा जिवो
So desire to work, willingness to work will decline. The individual will demotivate. So it is a situation of grief, despair and pain. ନୈରାଶ୍ୟ ହତାଶ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ପ୍ରବଳ ଶୋଷ ଲାଗିଲା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଦେଇ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମରିଚିକାରେ ଯାଉଛି ପ୍ରବଳ ତୁଷାର୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଖରାଦିନେ ସେ ଯାଉଛି ବାଟରେ କୌଣସି ଗାଁ ଗଣ୍ଡା କିଛି ପାଉନାହିଁ ନିରାଶ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ରୌଦ୍ର ତାପ ସେ ଫେସ୍ କରୁଛି ରାସ୍ତାରେ ସୋ ନିରାଶ ବୋଧ କଲାଣି ଯେ ଜଳ ପାଇଁ ମିଳିଲା ନାହିଁ ତା ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ କିଛି ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା ଆଗକୁ ଜଳଟା ମିଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପାଇଲା ନାହିଁ ମରିଚିକାରେ ଯେଭଳି ଢେଉ ଢେଉ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ ଖରାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମିରେ ଢେଉ ଢେଉ ଦେଖାଯାଏ ଆହୁରି କିଛି ବାଟ ଚାଲିଗଲା ସେ ପାଇଲା ନାହିଁ ଜଳମୁଦା ପାଇଲା ନାହିଁ ହତାଶରେ ଗତି କଲା ଆହୁରି ହତାଶ ହେଲା ସେ ନୈରାଶ୍ୟ ବୋଧରୁ ହତାଶ ହେଇଗଲା ତାପରେ ହତାଶରୁ କଣ ହବ ଗ୍ରିଫ ଡେସ୍ପେୟାର ଆଣ୍ଡ ପେନ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହବ ତାପରେ ଜୀବନଟି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିବ So just like poverty is a situation of grief, despair and pain. ଗୋଟିଏ ପିଲାଟି ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲା ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦକ୍ଷତା ଏଫିସିଏନ୍ସି ତା ପାଖରେ ହେଲା ରହିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ସେ କଣ ହେଲା ଚାକିରି ବା ନିଯୁକ୍ତି ପଛରେ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲା ବର୍ଷେ ଗଲା ଦି ବର୍ଷ ଗଲା କଣ ହେଲା ନିରାଶ ତାକୁ ଲାଗିଲା ନିରାଶ ପରେ ଆହୁରି ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ଆଗେଇ ଚାଲିଲା ଆଉ ବର୍ଷେ ଦି ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ନ ପାଇଲା ତା ଆଗରେ ହତାଶ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ହତାଶ ଆସି ଦେଖାଗଲେ ତାପରେ ଆଉ ଦି ବର୍ଷ ପୁଣି ଚାଲିଲା ଆଗେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜବ ଅପରଚୁନିଟି ନ ପାଇଲା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଖାଲି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଇ ସେ କଣ କରିବ ପାଗଳା ହେଇଯାଇପାରେ ନଚେତ ଇନଭଲ୍ଭ ଇନ୍ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କାରଣ ଗୋଟେ ଯୁବକଟି ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ସବୁ ଥାଇ ପ୍ରଚଳିତ ମଜୁରୀ ହାରରେ କୌଣସି ଠାରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲା ନାହିଁ ସୋ ନୈରାଶ୍ୟ ହତାଶ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତା ମନ ଭିତରେ ଆସିକି ଦେଖାଗଲା ସେ ଗୋଟିଏ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିରେ କନଭର୍ଟ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ପାଗଳା ହେଇକରି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବିଚରଣ କରିପାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଖାଲି ଛଟପଟ ହେଇ ନିରାଶ ହେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଇଥାଏ so that's why poverty is a situation of grief despair and pain so poverty is ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ହେଉଛି poverty and absolute okay so thank you to all ଆମର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆସିଲାଣି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ so good night to all learners ଆସନ୍ତା କାଲି ପୁଣି ହ୍ୟାଲୋ ओके सर ଆସନ୍ତା କାଲି ପୁଣି ରୋଷେଇ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝିଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ thank you to all learners गुड नाइट सर good night थैंक यू सर ए ग्रुप के करथिले बा